Direct and conventional path load. So direct and conventional path load is basically another technique within the data loading. We will discuss method of saving data, comparison of conventional and direct path, and we will discuss logging changes, enforcing constraints, parallel direct path and enforcing constraints. Conventional path load use SQL processing and database commits for the saving of the data. So basically, normal way when we load the data, we normally manage to load the data with the help of commit statement. The insertion of an array record is followed by commit operations. तो जब डाटा आपका अरे की फॉर्म में जाता है तो वो जब लोड होता है वो भी आपके पास कमिट की फॉर्म में मैनेज होता है और इस डाटा को हम कहते हैं सेवरल ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में ये मैनेज होता है. Direct path load is basically managed with the help of data saves write blocks to the main option, and then in this particular case we will use Oracle to manage this data and this differentiate the data from the commit statement. During data save, full database blocks are written to the database. Blocks are written after high watermark table, which are basically normally managed during the preference of the data load. After data save, high watermarks are moved and internal sources are being released after a data save. So after that data save, basically the transaction is normally ended and indexes are not updated during the data saving of this particular method. Similarly, we have a conventional load and direct path load. We use the, as I said, commit statement, but we use the data save option in the direct path. Redo entries are always there, but we normally manage redo only under the specific conditions. Enforce integrity is possible. Enforce is also possible only the primary keys and not null as well. Insert trigger fires, insert trigger do not fire. So these basically cannot be managed. And similarly, clusters are normally managed and cannot load into the cluster table. So in direct path, we cannot manage, as I mentioned, use clusters. Other users can make changes in tables. Other users cannot make the changes in the users. So these are basically general comparison of the conventional and direct load. So conventional path loading generates redo entries just as DML statements. तो इस तरीके से जब हम DML स्टेटमेंट्स के थ्रू कन्वेंशनली पाथ लोड करते हैं तो हमारे पास लॉग, नो आर्काइव और आर्काइव लॉग मॉड जो है उसमें डेटाबेस होना चाहिए, लेकिन लॉगिंग इस फॉर्म में डिसेबल होती है क्योंकि आपके पास डाटा जो है वो लॉगिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा होता है और एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल बाय यूजिंग अनरिकवरेबल क्लासेस जो होती है वो कंट्रोल फाइल में मेंशन होती हैं. इन्फोर्सिंग कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास नॉट नल है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की के इश्यूज हैं और चेक कंस्ट्रेंट्स, इनको हम डिसेबल करते हैं और उसकी बेसिस पे फिर डाटा हम लोड करते हैं. ऑल्दो कि प्राइमरी की और यूनिक की जो है उसके चेक ड्यूरिंग होता है एट द एंड ऑफ रन कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं या उसको हम एसक्यूएल के थ्रू यूनिकनेस उसकी देख सकते हैं. मल्टीपल एसक्यूएल लोडर सेशंस नॉर्मली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द डायरेक्ट लोड. सो पैरेलल कन्वेंशनल पाथ लोड मैनेज कर सकते हैं, इंटर सेगमेंट्स की फॉर्म में कर सकते हैं और इंट्रा सेगमेंट कंकरेंसी विद द डायरेक्ट लोड मैनेज कर सकते हैं. कंकरेंट कन्वेंशनल पाथ में हम ये मैनेज करते हैं कि व्हेन ट्रिगर और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर मैनेज्ड और देयर प्रॉब्लम्स आर नॉर्मली अराइज्ड. इंट्रा सेगमेंट्स में लोड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल या पार्टीशंस मैनेज कर सकते हैं और इंट्रा सेगमेंट में हम यूज़ करते हैं कि मल्टीपल डायरेक्ट पाथ लोड सेशन कैसे मैनेज होता है और ये भी कंकरेंटली इस तरीके से परफॉर्म होता है. तो इन्फोर्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि डायरेक्ट पाथ लोड की फॉर्म में हम मैनेज ये करते हैं कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन आती हैं वो डायरेक्टली वन बाय वन किस फॉर्म में आती हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एसक्यूएल लोडर हम यूज़ कर रहे हैं तो इस एसक्यूएल लोडर की वजह से टेम्परेरी सेगमेंट यूज़ होता है और ये टेम्परेरी सेगमेंट जो है ये इस फॉर्म में यूज़ होके हाई वाटर मार्क पोर्शन में ये डाटा को डायरेक्टली लोड कर देता है. सो दिस इज़ हाउ नॉर्मली इन्फोर्सिंग कंस्ट्रेंट्स आर मैनेज्ड.